Good morning. Today we will see the application of a queue and circular queue. Previously what we have seen? We have seen what do you mean by queue, pointers in a queue, what are the operations and other criteria needs to be followed while applying the queue operation. Now we will move on our next topic, application of queue and circular queue. Application means what? Use of queue. Many situations you are using queue, something like printer. You must have used printer. In that you print first image, then Word document, then Excel document, then all are get stored into the one queue. You can see by double clicking on printer, then properties all there is a separate window for a queue. Another example like simulation, CPU scheduling, which we will be studying in next chapter. So there is a one scheduling algorithm like FIFO, first in first out, that is queue data structure. Multi-level queue scheduling, there is a one concept that different level of queue for the scheduling, higher order scheduling, lower order scheduling, middle order scheduling, and last is a round robin. Round robin means again round means process 1, process 2, process 3, again process 1. Behind its working there is a concept of a queue. All are application of queue, it will be asked for a 2 marks. What are the application of queue? So you have to write simple definition of queue and 2 or 3 lines description about queue, then the application, which is simulation, second is CPU scheduling, third is multi-level queue scheduling, and fourth is round robin scheduling. Now we will see the circular queue. I will show you one diagram. Maybe it is not possible 100% to understand the concept using online lecture, but then also I will try to send you animation, or I am showing you on a book first and then I will explain you. Consider this diagram. This is of normal queue. In this queue there are 4 elements or items, that is A, B, C and D. A is located at 0th position, B is located at 1st position, C is located at 2nd position, and D is located at 3rd position. So 0, 1, 2, 3, there are 4 values, 4 data entries. Okay, and as you can see, insertion operation, upon the insertion or addition of elements in a queue data structure, rear pointer is added by 1, then what will be the value of rear? That is r equal to r plus 1. And in case of decrement or in case of deletion, rear front pointer gets incremented by 1. Again I am repeating, in case of queue there is never a case like upon deleting any pointer will get reduced. So there is a always operation like front is equal to front plus 1 and rear equal to rear plus 1. Check this. For adding or inserting data into queue, the rear pointer we have to shift by 1, that is incremented by 1. So value of a rear will be rear equal to rear plus 1. And for the removing or for the deletion, front pointer will be increased by 1, that is front equal to front plus 1. So upon consider or imagine, first there was a empty queue which was like both the pointers, that is rear and front pointer, were located at -1. After that we have incremented rear pointer, so rear pointer was at 0, then 1, 2 and 3. Now the condition is reached when rear pointer is at the location number 3, and at location number 3 there is a alphabet or data or value 3, but front pointer, where is the
front pointer, it is still located at 0 because we have not yet performed deletion operation. Remember, when deletion operation need to be performed, front pointer is incremented by 1. So now consider a value which I want to delete. Better you can say we have to delete the one value from the queue. So according to the concept of queue data structure, which is first in first out, A was the very first value which was inserted, then it was a B, then it was C, and at last it was the D. So A is the target element which will be deleted very firstly, because you all know queue is a data structure of which type? First in first out, that is first three inserted value in our case, which is A. It is the target. So now what will be the value? Front is equal to front plus 1, so 0 plus 1. Now front will be at B position and A is deleted. So now front pointer is at the location number 1 because A was deleted at 0th location, and now what is the condition? That front pointer is moved to the B, that is the first location. Now how many elements are there in a queue? There are only 3 elements, which are B, which is located at first location, C, which is located at second position, and D, which is located at third position. In a queue there are total 4 locations, but as I have deleted one value, so there are only 3 value present and one empty space. Now again consider the one more deletion. Now front pointer will move to the second position. So now my array is containing only 2 value, which is C at location number 2 and D, which is at location number 3. Now again I am trying to delete the value. So according to concept or a principle of a queue, that is first in first out, now C will be the next element which will get deleted. So I will increment front pointer, because in case of queue, front is always incremented when we want to delete element. So now the front is at second position. As I have to delete one element, it will be shifted to third. Consider this diagram. Now what it is showing? It is showing that my front and rear pointer both are at the third position. Means I am having only one element in a queue, but queue's capacity is how much? 4. Now 3 vacant position are there. Okay, up to now there is nothing or no problem, or everything is working fine. Now consider a next condition. Now don't remove the element. Now consider if I want to insert a element. So as you know, for inserting element, the rear pointer should be increased. Rear pointer should be incremented, or we should increment rear pointer by 1. So now what will happen? Rear pointer's value is 3, and if I want to add one element or a one data in this queue, is it possible? No, because now rear pointer will get out of its limit, that is out of queue. Okay, simple. रियर पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा? आउट ऑफ इट्स लास्ट पोजीशन. क्यू की साइज है ओनली 4, लेकिन ये पॉइंटर अभी कहाँ पे जा रहा है? 4 के बाहर जा रहा है, यानी 5 पे. 5 नाम की वैल्यू अपने पास है क्या? नहीं है. बात यहाँ तक समझी.
लेकिन अभी देख लो, प्लीज चेक द लेफ्ट साइड ऑफ अ फ्रंट एंड रियर पॉइंटर ऑफ अ सर्कल डायग्राम। मतलब कहाँ पे देखो, ये 3 वैल्यू देखो, 3 वैल्यू में कुछ 3 लोकेशन देखो, 3 लोकेशन में कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे? नहीं, तीनों के 3 एम्प्टी है। तो अभी केस क्या बन गई, आई एम हैविंग द क्यू विच इज हैविंग वैल्यू सॉरी कैपेसिटी ऑफ अ 4 बट इट साइज इज 1। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 4। मतलब वो 4 वैल्यू हैंडल कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें डेटा कितना प्रेजेंट है? ओनली 1, दैट इज डी, जो सबसे लास्ट पोजीशन पे है। एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी और द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द क्यू, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड addition of value in a queue is only performed at the rear position, and rear will be exceeded its limit, that is rear will be at location number 4. But is it available in our queue? No, so we cannot add one more value. But contrary to this, at the same time, on the left hand side I am having 3 vacant position, and even though I am having 3 वैकेंट पोजीशन, 3 खाली जगह है, फिर भी मैं उसमें एक भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। ये तो छोटा डेटा स्ट्रक्चर है, मान लो 1000 वैल्यू स्टोर करने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें आपका रियर पॉइंटर पहुंच गया 998 पे और फ्रंट पॉइंटर भी 997 पे है, उसमें आपको 10 वैल्यू ऐड करनी है, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? लिमिट जो है रियर की वो चली जाएगी 1000 के ऊपर। इवन दो यू आर हैविंग एम्प्टी स्लॉट, एम्प्टी लोकेशन कहाँ पे है? 0 से लेके 997 तक है। तो ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कोई इसके ऊपर सॉल्यूशन हो? तो ये सबके ऊपर सॉल्यूशन ही है क्या आपका सर्कुलर क्यू। सर्कुलर मतलब क्या? सर्कल। सर्कल कैसे होता है? सर्कल को कभी एंड पॉइंट रहता है क्या? नहीं, आप कोई भी पॉइंट को सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं बोल सकते और कोई भी पॉइंट को सर्कल का एंडिंग पॉइंट भी नहीं बोल सकते। सेम वे अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर क्यू जैसा कुछ इम्प्लीमेंट करता हूँ तो कैसे करूँगा, ये देखो। नाउ कंसिडर our previous queue. Okay, wait. Now front and rear pointer are both at the location number 3, and location number 3 is containing the value d. Now we can see clearly from this diagram, if I want to insert or add element e, then as per principle I will increment r, but r's value is, that is the real value is 3. Now I will do 3 plus 1, that is 4, but is place number 4 is available in the queue? No. So I am unable to add one element even though I am having location number 0 empty, location number 1 empty, location number 2 empty. So in this case I will provide a smart solution. What I will do, I will point out the rear pointer of the d, that is the next pointer, to स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्यू, दैट इज, देखो ये आपको डायग्राम में कैसे दिखेगा, इट विल रिजेंबल लाइक द सर्कल। पहले नॉर्मल एक लाइन थी 0 1 2 3, तो ये लीनियर क्यू हो गया। सर्कल क्या होता है? जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से घूमते हैं वहीं पे आके रुकते हैं, वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे। पहले 0 1 2 3 पूरे एम्प्टी थे, रहेंगे, 0 में वैल्यू ऐड कर दी, फिर 1 में ऐड की, फिर 2 में की, ऐसे करके रियर पॉइंटर एक एक होके इंक्रीमेंट होके आगे चला गया। फिर उसके बाद मैं क्या किया, मैं वैल्यू डिलीट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले 0 नंबर की वैल्यू डिलीट हुई, फिर 1 नंबर की, फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की बारी आई। लेकिन वही टाइम पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ न्यू वैल्यू, तो बिकॉज ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स वर्किंग प्रिंसिपल, इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू इंसर्ट सिंगल वैल्यू, इवन अ सिंगल वैल्यू, even though I know and I can see there is a 3 value empty location are present in the queue. So I have provided one solution, that I am pointing the rear pointer, that is last pointer of a queue, to the very first location, that is the 0th. So it is resembling or it is appearing like the circle,
It is never ending. Now what I can do, then new value will be inserted at the location number 0, then again new value will be inserted at the location number 1, new value will be entered at the location number 3. I will show you in an updated diagram. See this diagram. Now I am utilizing the blank spaces or empty location which was there in a linear queue by simply pointing out a external pointer from last position, that is the third number location of the previous queue, to the very first location, that is 0. Now rear pointer will not be going to location number 4, better rather than it is going to location number 0, and if I am getting the rear pointer, then it is allowing me, or it is showing me the place to insert a new value. So E will be added at the location number 0. Now again I will check for location number 1 and 2, is it empty? So from the linear queue of above it is empty. So now I will try to increment the rear pointer. So rear pointer, now rear's value is what? 0. Now increment by 1, that is rear equal to rear plus 1, that is 0 plus 1, that is 1. So at the location number 1 I will be adding F. Now rear pointer is at location number 1 and its data containing is F, and previously G was empty. Maybe I am showing here with a G to second number G, but previously it was empty, and as per the rules or the principle of working of the queue, rear equal to rear plus 1 in case of addition. So the rear pointer which was at first location will be incremented by 1, that is 1 plus 1. So rear will be at 2. This is all the working of the circular queue, which is very important, and it will be asked for a 6 to 8 marks. You have to explain, you have to just tell the circular normal queue. In normal queue you have to explain the linear queue, you have to show example, diagram, adding of element, removing of element, movement of front and rear pointer, and then you have to write disadvantage. The main disadvantage is what? Even though you are having empty location in a queue data structure, still you are not able to add the new value, as queue, that is linear queue, does not support this type of operation. Which type of operation? Increment of the rear pointer beyond its limit. So what we are providing solution? We are providing the solution like end point, that is the last point of the present queue. We are using pointer, and pointer, which type of a pointer? A pointer which is indicating to the very first location, that is 0th location of a queue. So again we have place to indicate the rear, and we can apply same logic, rear equal to rear plus 1. So now E will be added at 0th location, F will be added at first location, G will be added at the second location. There are two formula, दो फॉर्मूला है जो क्या चेक करना है, सेट करने के लिए फ्रंट और रियर पॉइंटर इन अ सर्कुलर क्यू. अब तक जो देखा वो आपका नॉर्मल क्यू था, लिनियर क्यू, उसमें फ्रंट रियर नॉर्मली सेट होते थे. अभी यहाँ पे क्या है, रियर को सेट करने के लिए क्या है, रियर प्लस 1% ऑफ अ मैक्स साइज. मैक्स साइज मतलब क्या, आपकी क्यू की कैपेसिटी, क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है, तो वो क्या हो गई, आपकी साइज हो गई. दैट इज रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, और जो परसेंटेज का सिंबल है वो क्या, आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर. इट इज़ नॉट द डिवीजन ऑपरेटर. डिवीजन करने के बाद एंडिंग में जो बचता है, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो वो डिवीजन हो गया, उसका आंसर आएगा 2.5. 4 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर आएगा 2. लेकिन ये रिमाइंडर ऑपरेशन, तो उसमें क्या रहेगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर. 5 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर आएगा, वो उसका आंसर आएगा, दैट इज़ द 1. 4 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 2 उसका डिवीजन का आंसर आएगा, लेकिन उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या आएगा, 4 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर के हिसाब से आंसर क्या आएगा, 0. अभी
हमें सबसे पहले कुछ तो एजम्पशन करने रहते हैं, किसके लिए? सर्कुलर क्यू के लिए। फ्रंट विल बी ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द क्यू। जो फ्रंट रहेगा वो हमेशा क्या करेगा? फर्स्ट लोकेशन को इंडिकेट करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, मतलब क्या है? रियर इक्वल टू फ्रंट। इसी का मतलब क्या है? दोनों एक ही लोकेशन पे है, तो उसका मतलब क्या होता है? क्यू इज एम्प्टी। सबसे पहले क्या है? फ्रंट हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड चीज़ क्या बोल रही है? फ्रंट और रियर दोनों एक ही साथ है, तो वो क्या है? एम्प्टी है। थर्ड में क्या है? ईच टाइम व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, कभी भी आप न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करो, आपको किस में ऐड करना है? तो हमेशा याद क्या रखना है? फॉर एडिशन, फॉर एडिंग एलिमेंट इनटू क्यू कौन सा पॉइंटर रखता है? रियर। तो रियर को क्या करना रहता है? रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। सिमिलर मैनर ईच टाइम व्हेन द एलिमेंट इज डिलीटेड, तो कभी डिलीटेड में हम लोग को माइनस करना है क्या? नहीं, हम लोग माइनस कहाँ पे करते हैं? तो स्टैक में करते हैं। स्टैक में कितने पॉइंटर थे? 2 या 5? तो स्टैक में कितने पॉइंटर थे? स्टैक में ओनली 1 पॉइंटर, विच वॉज कॉल्ड एज अ टॉप पॉइंटर। सो इन केस ऑफ टॉप increment adding a data into stack, then we have to increment top by 1, and if we are removing the element from stack, then we have to perform the deletion of by 1, that is the top equal to top minus 1. But in case of q, there is nothing like minus or subtraction. If you are adding data element, then your process should be rear equal to rear plus 1, and if you are deleting element or you are removing element, your process should be described by the formula front is equal to front plus 1. Okay, now there is a program same like the stack and queue, which I am assigning you as a homework. You have to perform, you have to understand. The logic behind program is very simple. You have to declare queue, implement queue, decide the size, add element. Before adding, you have to check its capacity, whether you can add element or not. Delete the element. Before deleting, you have to check whether the elements are present or not. And after deletion and addition per operation, at any instance of time, you have to use the loop. Why loop? Because you have to extract the value from certain location up to certain location. Maybe it's from low to high or high to low, and one function you will be using as a display function. But the concept like providing the front and rear pointer or to identify where our pointer is, and depending upon pointer's position what we should do, it is so it will be useful in implementation of the circular queue program. Now next we will start with the priority queue. Today I will tell you very small about priority queue. In next lecture we will study in a brief. First tell me, what do you mean by priority? Sub, can anyone tell? The priority means the importance, उसका ज़रूरी कितना है वो. सो नॉर्मल क्यू क्या रहता है अपना कि कोई भी चीज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में होती है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि कलेक्शन कैसे होता है? इन अ क्यू द आइटम्स आर रिमूव फॉर प्रोसेसिंग इन द सेम ऑर्डर in which they were added to queue. But in case of priority queue, every element, मतलब वहाँ पे एलिमेंट तो ऐड हो गए, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिमूविंग या फिर रिमूव करने के टाइम पे क्या होगा? हम लोग उसकी प्रायोरिटी देखेंगे. यही क्या है? सिंपल प्रायोरिटी क्यू है. तो प्रायोरिटी क्यू में 2 टाइप रहते हैं, एक असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है. डिटेल में ब्रीफ में हम लोग कल देखेंगे. सो करके लिए क्या रहेगा अपना? डी क्यू, दैट इज डबल एंडेड क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू. इतना किया तो अपना ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा. बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाई करो, पढ़ना चालू करो, एग्ज़ाम आ जाएगी. डाउट रहेगा, व्हाट्सएप है, ईमेल है, नॉर्मल कॉल है, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज है, किसी के ऊपर भी कॉल करो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो, नॉर्मल कॉल करो, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे करो और डाउट क्लियर करो. डाउट दबाते बैठे तो कभी आगे कुछ समझेगा नहीं. ये सब्जेक्ट
अभी आपको आगे भी लगेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए, या फिर अगर इंजीनियरिंग करते हो वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट और डिटेल में आपको रहेगा। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, एक ही चीज़ देखी सर्कुलर क्यू, लेकिन सर्कुलर क्यू देखने के लिए सर्कुलर क्यू ज़रूरी होता है, दैट इज़ वाई। उसके लिए लीनियर क्यू देखना पड़ा। लीनियर क्यू के जो डिसएडवांटेज थे उसमें कुछ तो फॉल्ट जैसे थे, तुम लोग बोल सकते हो फॉल्ट जैसे, या फिर जो ड्रॉबैक थे उसे ओवरकम करने के लिए सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट किया है। ओके, थैंक यू।